Hello. So, in the previous session, we were talking about profit and loss. Let's continue with the same. A quick recap of what we have covered as of now. Started with the basic concepts of profit and loss. We talked about the terminologies related to it, including cost prices, selling price, profit, loss, and the formulas related to the same. So we discussed all the formulas, we derived all the formulas in the previous session only. We started with the different types of questions that are being faced upon generally when we are talking in terms of profit and loss. Starting with the first type of question, going ahead with the second, third, fourth, and fifth. These are the five types of questions that we have discussed in the first session of profit and loss. Going ahead with the second session of profit and loss, we'll be continuing with the same and going ahead with the next type of question, that is type 6. Before I put the question in front of you, let me just ask you a basic question related to the same. So suppose if I am selling a pen and I'm gaining 2 rupees on selling one pen. What will be my gain if I'll sell 10 such pens? मैंने एक पेन सेल किया, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट होता है. अगर ऐसे मैंने 10 पेन सेल कर दिए तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? The simplest answer is 20 rupees. अभी reframing the question, अगर मैंने एक पेन सेल किया, I'm gaining 2% of profit. What will be my profit if I'm selling 10 such pens? अगर मुझे एक पेन पे 2% का प्रॉफिट है, मुझे 10 पेन्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? Now, generally what happens is कि students do provide me the solution like sir 20% होगा or something like that. Let's clarify this thing. देखिए, अगर एक पेन का सीपी था मेरा 100 रुपीज, प्रॉफिट था 2%, तो एसपी हो गया मेरा 102 रुपीज. 10 पेन्स का सीपी हो गया मेरा 1000 रुपीज, 100 into 10. सेलिंग प्राइस भी 102 into 10, 1020 हो गया. So there is still a profit of 20 on 1000 into 100, which still remains the same 2%. So that is the crux, that your profit percent is independent of the number of articles. You might calculate your profit percent on 1 article or 2 articles, 5 articles, 7, any number of articles you may calculate your profit percent on. You'll always get the same answer at that. What matters is that if you are considering the cost price of 4, you have to consider the selling price of 4. You cannot consider the selling price of 5 or 3. So number of articles associated with cost price and selling price should always be the same. That is the only point to be taken care of. So going ahead with the same procedure, I'll be putting the question in front of you. You have to read the question, have to pause the video for 2 minutes, have to solve the question, come back. We'll discuss the doubts, we'll discuss the solution, we'll discuss the answer, and we'll go ahead. Question is on the screen. Go ahead and pause the video for 2 minutes. Try to solve the question. Okay, I feel like you must have solved the question by now. So let's come to the solution. First of all, the correct answer. So correct answer for this is there is a profit of 5%. I hope you must have got the correct answer, but still let's discuss the approach with it. Now, look, what happens is I told you, whenever it's a question related to profit loss, you always need to start with the cost price. So सबसे पहले मैंने cost price लिया. Cost price of one article not given to me, मैंने 100 rupees assume कर लिया. There were 42 articles. तो cost price of 42 articles कितना हो गया? One article का 100 है, 42 articles का 4200 हो गया. Selling price of 40 articles. अब जल्दीबाजी में generally students इसका आंसर 4000 बोल देते हैं. Need to take care of. SP of 40 articles कितना है? जितना CP of 42 articles है. मतलब 4200. अब यहां से what I'll do is I'll calculate the SP of one article. That is going to be 4200 upon 40, which turns out to be 105 rupees. So look, you bought an article for 100, you sold the article for 105. There is a profit of 5 on 100, which turns out to be 5% profit. And that's the correct answer. So this is the approach to solve a question like this. But particularly for a question like this, there is an alternate method available, which will appear to be an easier one to you, hopefully. So you can take a note, you can take a screenshot, then we'll go ahead with the alternate approach for the same. Okay, so I hope you must have taken a note or must have taken a screenshot for the same. Going ahead, मैं इसका alternate approach बता देता हूँ. CP off का मतलब होता है multiply 42 equal to SP off का मतलब होता है multiply 40.
एसपी को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा। 42 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब सीपी अपॉन एसपी मेरा बन चुका है अभी 40 अपॉन 42। I can assume CP to be 40, SP to be 42. So I have got a profit of 2 rupees on 40 rupees ka CP into 100. Against all this, you'll get the same answer as 5% profit only. I hope this approach seems to be an easier one to you. So always do remember कि जब भी इस type का question आएगा, we have to go with an approach like this only, right? The concept associated with the question is if CP of x equal to SP of y, जैसे आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे CP of 42 इक्वल टू SP of 40, तो मैंने CP को अज्यूम किया 40 which is the number with SP, और SP को अज्यूम किया 42 which is the number with CP. Same concept is to be applied. CP of x equal to SP of y. I'll assume CP equal to y and SP equal to x. My question will be solved easily after this. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है CP of x equal to SP of y, directly what you have to do is CP को y और SP को x assume कर लीजिए. You'll get the answer easily. I hope that's clear. Going ahead with it. You must have taken a screenshot or must have taken a note of it. I am removing the content. Going ahead. Look, यहाँ तक we have completed the types of questions related to profit loss. इसमें एक advanced topic और आता है which we'll be talking about now, and that is MP. What is MP? Now the general answers are it's mark price, it is market price or something like that. First of all, there is nothing like market price. It's marked price. Marked matlab something which is written. You have marked it. So the price which is written on the article is the mark price. Look, whenever we are going to the market, आप कभी भी मार्केट जाते हैं, आपको कुछ भी परचेज करना होता है, there is always a price written on the article. आप किसी भी आर्टिकल को पिक करके देखेंगे, उस पे कहीं ना कहीं एक प्राइस रिटर्न होता है इन जनरल. ये जो प्राइस उस आर्टिकल पे लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, which is parallelly known as MRP as well. MRP is maximum retail price. It is again known as LP, that is list price, and again known as TP, that is tag price. तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं. It can be MP, it can be MRP, it can be LP, it can be TP. All of them mean the same. This is the price mentioned on the article. जो भी आर्टिकल पे लिखा हुआ है ना, ये वो वाला प्राइस होता है. ठीक है. एंड अब एक दूसरा टर्म आता है जिसको अपन एक्सप्लेन करते हैं. पहले एक एग्जांपल लेते हैं. सो सपोज यू वेंट टू द मार्केट. आपने एक मार्केट में एक आर्टिकल देखा, शॉपकीपर के पास वो आर्टिकल था और उस आर्टिकल पे एमपी यानी मार्क प्राइस लिखा होता 50 रुपीज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन द शॉपकीपर सेल दिस आर्टिकल टू यू फॉर ₹55? आप आर्टिकल शॉपकीपर आपको 55 में सेल कर सकता है? द आंसर इट्स नो, बिकॉज 50 जो उस पे आर्टिकल पे लिखा हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस जिस पे आर्टिकल को सेल किया जा सकता है. इससे कम पे बेच सकते हो, इतने पे बेच सकते हो, इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते. अच्छा, कैन द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल फॉर ₹50? यस. कैन द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल फॉर ₹40? अगेन इट्स अ यस. एमआरपी से कम पे आप कभी भी आर्टिकल को सेल कर सकते हो. सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपने एक आर्टिकल जिसपे एमआरपी 50 लिखा हुआ था उसको 40 में सेल कर दिया, तो ये जो 10 रुपीज है ये आपका लॉस है क्या? द आंसर इट्स नो. क्योंकि लॉस तो तब पता चलेगा ना जब ये बताया जाए कि आपने कितने में आर्टिकल को परचेज किया था. 50 wasn't the cost price of the article, it was the marked price of the article. इतना लिखा हुआ था, आपको पता ही नहीं है कितना में आपने आर्टिकल को परचेज किया. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रॉफिट लॉस एंड ऑल. तो फिर ये 10 रुपीज क्या है? दिस इज अ डिस्काउंट. सो डिस्काउंट क्या होता है? जो रिडक्शन आप प्रोवाइड करवा देते हो एमपी पे या फिर एमआरपी पे, उसको आप डिस्काउंट बोलते हो. दिस इज द राइट ऑफ अ शॉपकीपर, वो अपना आर्टिकल कितना कम करके सेल करता है. सो ये डिस्काउंट होता है. Going ahead with the formulas. Acha, the article was having an MRP or an MP of ₹50. You sold the article for ₹40. You gave a discount of 10 rupees. अब ये कैसे कैलकुलेट किया अपन समझने की कोशिश करते हैं. 50 was the MRP. You sold, मतलब 40 was the selling price SP, and you are calculating the difference. So discount equal to MP minus SP हो जाएगा. I hope that's clear. Going ahead.
आपने जो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये 50 रुपीज पे दिया या 40 रुपीज पे दिया? सो द लॉजिकल आंसर इज 40 रुपीज पे। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इज कि आपने सॉरी, द लॉजिकल आंसर इज 50 रुपीज पे। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इज कि आपने 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया 50 रुपीज पे। सो योर डिस्काउंट परसेंट विल बी कैलकुलेटेड एज 10 अपॉन 50 into 100. Can you get me the formula for this? Yes. The formula is discount upon MP into 100. You are giving a discount of 10 on 50. Discount upon MP into 100 is the formula for calculating discount cost. Coming back to the entire transaction की हो कैसे रहा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने एक आर्टिकल खरीदा, आप उसको सेल करने वाले थे, उससे पहले आपने उसका एक मार्क प्राइस सेट कर दिया। आपके पास एमपी है, कस्टमर आया, कस्टमर उतने में नहीं परचेज कर रहा था, आपने थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर किया और आर्टिकल को सेल कर दिया। मतलब आपने एमपी को कुछ D% से रिड्यूस किया और आर्टिकल को सेल कर दिया। यू गॉट योर एसपी। नाउ सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये चीज अपन बहुत बार कर चुके हैं। गेट मी द फॉर्मूला क्विकली, स्टार्टिंग विद एमपी, आई राइट डाउन एमपी, फॉर द एरो इन बिटवीन आई मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 100 minus D upon 100. I've reached SP equal to SP. The formula is MP 100 minus D% upon 100 equal to SP. Okay, note point. देखिए, जब मैंने परसेंटेज की बात की थी तो आई टोल्ड यू कि whenever it's a base value I not give it to you, you'll assume something. प्रॉफिट लॉस में बेस वैल्यू क्या था? इफ यू रिमेंबर, एनीवन? दैट वाज द कॉस्ट प्राइस, बिकॉज यू वर कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट में बेस वैल्यू क्या है? आप डिस्काउंट कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं? एमपी पे। सो इन केस ऑफ डिस्काउंट ऑलवेज अज्यूम द मार्क प्राइस इज नॉट गिवन टू बी 100 और 100x एज पर द रूल, जो अपन बहुत बार कर चुके हैं। आई डोंट फील लाइक इसमें कहीं कोई कंस्ट्रेंट रहा हो। Okay, so I hope the formulas written on the screen are clear to you and you're getting the derivation for the same. तो अब ये रटने वाला नीड खत्म हो चुका है। Going ahead, you can take a screenshot. We'll go ahead with the next one. Okay, so you must have taken the screenshot. Going ahead, next concept आता है successive discount. अब ये क्या होता है? Look, when we are talking about percentage, मैंने आपको successive word का मतलब बताया। Successive मतलब in succession, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। So successive discount क्या होता है कि आपने एक डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद आपको एक और डिस्काउंट देना पड़ा, उसके बाद आप एक और डिस्काउंट। देखो, बेसिकली आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। आज की डेट में अपन सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जैसे लेट्स अज्यूम मिंत्रा पे आपने एक डेनिम परचेज किया, पसंद कर लिया। सो डेनिम का एमआरपी था 2000, लेकिन ऑलरेडी मिंत्रा उस पर 30% डिस्काउंट देके 1400 में आपको सेल कर रहा है। आपने 1400 वाला डेनिम अपने कार्ट में ऐड किया। अब आप कार्ट में गए पेमेंट के पेज पे, तो वहां पे बहुत सारे बैंक ऑफर्स होते हैं। जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया तो ये डिस्काउंट मिलेगा, इसका यूज किया तो ये, मतलब बहुत सारे एडिशनल डिस्काउंट्स होते हैं। तो ये जो सेकंड डिस्काउंट आपको दिया जाता है, ये 2000 पे दिया जाता है, 1400 पे दिया जाता है, 1400 पे। ठीक है, दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन अ ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। व्हाट द कॉन्सेप्ट? सो बेसिकली एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कस्टमर आया आपके पास एक आर्टिकल था विद एन एमआरपी। यू ऑफर्ड अ डिस्काउंट परसेंट कि D1% डिस्काउंट दूंगा। कस्टमर डिडंट अग्रीड विद इट। आपने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का D2% और एडिशनल डिस्काउंट दे दो। कस्टमर स्टिल डिडंट अग्रीड ऑन इट। आपने कहा ठीक है, एक मैं फाइनल D3% डिस्काउंट और दे सकता हूँ, सो आई विल ऑफर D3% ऑन डिस्काउंट ऑन द फाइनल प्राइस। कस्टमर अग्रीड दिस टाइम। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास एक एमपी था, उसमें आपने तीन डिस्काउंट दिए, D1, D2, D3%, एंड फाइनली यू सोल्ड द आर्टिकल। Now coming to the formula, this is a case of successive percentage increment decrement which we have studied in the topic percentage. So I hope इसका formula derive करना is no big deal. That is something you can easily। करना क्या है? सबसे पहले starting with MP. So I wrote down MP, पहला एरो पहला ब्रैकेट 100 minus D1% upon 100, दूसरा एरो दूसरा ब्रैकेट 100 minus D2% upon 100, तीसरा एरो तीसरा ब्रैकेट 100 minus D3% upon 100। आप SP पे पहुंच चुके, you'll write it equal to SP। I hope this formula is clear to all and you don't need to mug up this formula in the future. You can take a screenshot, then we'll go ahead with the next one. Okay, I hope it's done. Going ahead. We'll discuss the next type of question. Type 6 were done. Type 7 पे बात करते हैं. Again the same procedure. Read the question, pause the video, take 2 minutes, solve the question, come back, we'll discuss the answer. So here's the question on the screen. Please pause the video once you are done with the reading of the question. I hope
You must have solved the question by now. So let's come to the answer part. The answer for this is, it is generally confusing. Confusing in the sense what happens is कि इसमें दो आंसर्स आते हैं जो जनरली स्टूडेंट मुझे बताते हैं. One they give me an answer of 48%, the other they give me an answer of 52%. Which is the correct one? 52% is the correct one. अभी जो बहुत छोटा सा स्लाइड सा मिस्टेक है वो हो क्यों ना, वो समझने की कोशिश करते हैं. देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 20% एंड 40%. मतलब अगर मैंने एक ही आर्टिकल पे दो डिस्काउंट दिया, पहले 20 एंड देन 40, तो टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया वो बताना है. एमपी नहीं गिवन था, बट डिस्काउंट है तो स्टार्ट एमपी से करूंगा, तो मैंने एमपी को 100 अज्यूम किया. फिर डिस्काउंट था 20% का, आई मल्टीप्लाइड बाय 80 बाय 100. फिर डिस्काउंट था 40% का, आई मल्टीप्लाइड बाय 60 बाय 100. आई सॉल्व दिस. दो जीरो से दो जीरो, डबल जीरो कैंसिल, आंसर इज 48. देन व्हाई 48 इज नॉट द करेक्ट आंसर? बिकॉज ये सेलिंग प्राइस आया है. गो थ्रू द फॉर्मूला अगेन दैट आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड ओनली. ये जो इक्वल टू वाला वैल्यू है सेलिंग प्राइस होता है, ये डिस्काउंट नहीं होता है. सो आपने क्या किया, एक आर्टिकल जिसका एमआरपी 100 रुपीज था उसको 48 में सेल कर दिया. मतलब आपने 52 रुपीज का डिस्काउंट दिया ऑन अ टोटल ऑफ 100. दैट मीन्स 52% डिस्काउंट दिया. जल्दीबाजी में वी आर गोइंग टू टिक द ऑप्शन टू बी 48 एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस, 48 is always going to be there an option. So do take care of the thing. Ki 52% is the correct answer for this. The concept lying behind this type of question is the formula of successive discount gives SP and not the overall discount. So that is something need to be taken care of as a keynote कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको सेलिंग प्राइस दे रहा है, कभी भी ओवरऑल डिस्काउंट नहीं दे रहा है. I hope that's clear. We can go ahead with the next one. Can take a note, can take a screenshot, then we'll go ahead. I hope done. Going ahead. Type 8 question is on the screen. Again, the same procedure. Read the question, pause the video, take 2 minutes and come back. Which discount is better? 10% plus 20% plus 30% or 30% plus 20% plus 10%? Pause the video, start the question. Okay, so I hope you must have done the answer. You must have got the answer by now. And seems like the answer must have been surprising to you. Generally, what happens is कि अपन जब market में जाते हैं, as soon as we are seeing it's a 30 plus 20 plus 10, any day we will prefer this discount क्योंकि अपने को लग रहा है कि इसमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा. Very few of you will prefer this discount क्योंकि इसमें लग रहा है दिख के ही कि डिस्काउंट कम मिलेगा. But when you'll solve this, you'll find both the discounts to be equal. There is no difference at all in between the two discounts. It is just a shuffling of the discount sequence and it hardly matters. It won't create a difference in between the overall discount obtaining in the two cases. I'll tell you the reason for that. You were not even supposed to multiply the values and get the answer. What you were supposed to do is first case, 100 MP, 10% discount, 90 by 100, 20% discount, 80 by 100, 30% discount, 70 by 100. Second case, 100, 30% discount, 70 by 100, 80% discount, 20% discount, 80 by 100, 10% discount, 90 by 100. Just need to observe. दोनों केसेस में आप सेम ही तो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हो. हाउ डज इट मैटर कि सीक्वेंस क्या है? रिजल्ट तो सेम रहेगा. So basic सा concept is that in this case shuffling of discounts never create a difference. आप same values को multiply कर रहे हो different sequences में, there won't be any kind of difference in between the two. Both the discounts are equal. So the concept is overall discount remains the same irrespective of the sequence of discount. आप कुछ भी sequence of discount offer कीजिए, आपका overall discount same रहता है. So with this, I hope that it's done. With this, we are done with this topic, profit and loss. यहाँ पे आपके profit loss के 8 types और सारे theory part, सारे formulas complete हो जाते हैं. We are done with the chapter profit loss. You must have got the sheets. You will get some additional sheets as well. Just go through the sheets, complete the sheets, and we'll have the doubt discussion session accordingly. So I hope that's clear. We are done with percentage and we are done with the application of percentage. First one, profit loss as well.
We'll be continuing in the next chapter in the next session. Thank you.